आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरैक्टिव होने वाला है। बस जैसे बताऊंगा वैसे ही करिएगा, एक एक स्टेप एग्जैक्टली सेम फॉलो करना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपका टेस्ट है लिसनिंग का, आपका टेस्ट है इंफॉर्मेशन को मेमोरी में रिटेन करने का। आपके कम से कम 7 बैंड या इवन 9 बैंड आ जाएं, आपको एक अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा और वो है इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की, कि कितनी देर तक आप जो सुनते हो उसको समझते हो और अपने दिमाग में रख पाते हो। एमसीक्यूज या डिफ़िकल्ट सेक्शन 3 या 4 जो अगर हम कहें, वो उन्हीं बच्चों का ज़्यादा सही होता है जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन सुनते हैं, अच्छे से उस इंफॉर्मेशन को समझते हैं, रिटेन कर पाते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट के जैसे ही कुछ सुना, जो वर्ड सुन गया बस उसी को आंसर लगा दिया। आपकी इसी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं एक्सरसाइज लेके आया हूँ गाइस। आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको आज जो डिस्कस होंगे 5-6 क्वेश्चन वो दिखाऊंगा। अच्छे से उन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन नज़र नहीं आएंगे। जो एक्सरसाइज मैंने अपने गोल्डन टिप में आपके साथ शेयर की थी, वो आपके सामने एक ट्रांसक्रिप्ट चलेगी, आप सुनेंगे भी और पढ़ भी पाएंगे। एज सेड, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब मैंने चीज़ें कही थी आपकी इम्प्रूव हों। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि साथ साथ जब आप सुन रहे हो अच्छे से इनको समझिए और इस तरह से समझिए कि आपको एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो होगा क्या, जब ये ऑडियो स्क्रिप्ट बंद हो जाएगी, ये ट्रांसक्रिप्ट आपकी आंखों से डिसअपियर हो जाएगी, तो वापस से वही 5-6 क्वेश्चन जो पहले आपको नज़र आएंगे वो फिर से अपीयर होंगे और इस बार आपको ऑडियो को सुने बिना इन आंसर्स को फटाफट फिल करना है। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा करेक्ट आंसर्स और मुझे कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक रहे, मतलब आप कितनी इंफॉर्मेशन रिटेन कर पाए अपने दिमाग में। वो श्योर होगा, वो किससे जस्टिफाई होगा कि अगर तो आपने एक या एक से भी कम किया मतलब बिल्कुल भी नहीं रख पाए, और अगर आपके सारे के सारे ठीक गए दैट मीन्स यू आर सुपर्ब। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम ये एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हेल्प मी टू ग्रो मोर, प्रेस द बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई न्यूली अपलोडेड वीडियो एंड नेवर माइंड टू शेयर my latest video link with your friends as well and recommending them to subscribe my channel as well. So, basically, the problem we're addressing in our case study of the Horton Castle site is why so few tourists are visiting it. And we'll find out more from our interviews, but I did find one report on the internet that suggested that one reason might be because, as far as transport goes, access is difficult. I read that too, but that report was actually written 10 years ago when the road there was really bad, but that's been improved now. And I think there's plenty of fascinating stuff there for a really good day out, but you'd never realise it from the castle website. Maybe that's the problem. Yes, it's really dry and boring. I read somewhere a suggestion that what the castle needs is a visitor centre. So we could have a look for some information about that on the internet. What would we need to know? Well, who'd use it for a start? It'd be good to know what categories the visitors fell into too, like school parties or retired people. But I think we'd have to talk to staff to get that information. OK. And as we're thinking of suggesting a visitor centre, we'd also have to look at potential problems. I mean, obviously it wouldn't be cheap to set up. No, but it could be a really good investment.
And as it's on a historical site, it'd need to get special planning permission, I expect. That might be hard. Right. Especially as the only possible place for it would be at the entrance, and that's right in front of the castle. But it could be a good thing for the town of Horton. At present, it's a bit of a ghost town. Once they've left school and got any skills or qualifications, the young people all get out as fast as they can to get jobs in the city, and the only people left are children and those who've retired. Right. Something else we could investigate would be the potential damage that tourists might cause to the castle site. I mean, their environmental impact. At present, the tourists can just wander around wherever they want. But if numbers increase, there might have to be some restrictions, like sticking to marked ways. And there'd need to be guides and wardens around to make sure these are enforced. Yes, we could look at that too. OK, well, we've certainly managed...